Dear students, I am Nasimis. Today we are going to learn English class 10, lesson 2.2, The Boy Who Broke the Bank. रस्किन बॉन्ड बरतानवी नस्ल के हिंदुस्तानी राइटर हैं। उन्होंने भारत में बच्चों के अदब को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल अदा किया। 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण के एजाज़ से भी सरफराज किया गया है। A lie can run round the world before truth has got its boots on। यानी झूठ या अफवाह सच्चाई की बनिस्बत बड़ी तेज़ी से फैलती है और इस पर यकीन करना सरासर तबाही और बर्बादी है। रस्किन बॉन्ड ने एक लड़के के बोले हुए जुमले के असरात को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया है। एक स्वीपर बॉय नत्थू ने किस तरह एक बैंक को तबाह कर दिया। नादान गांव वालों ने बात की सच्चाई का पता नहीं लगाया और बैंक दिवालिया हो गया। 2.2 The Boy Who Broke the Bank। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Peoplenagar Bank owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? पीपल नगर में सेठ गोविंद राम की बैंक थी। नत्थू बैंक की सीढ़ियों को झाड़ते हुए बड़बड़ा रहा था। छोटी सी झाड़ू से जल्दी जल्दी झाड़ने पर जो धूल उड़ रही थी वो वापस उन्हीं सीढ़ियों पर जम गई। जब नत्थू कचरा उठाने का दस्ता डस्टबिन पर ठोक रहा था तभी धोबी का बेटा सीताराम वहाँ से गुजरा। सीताराम सर पर इस्त्री किए हुए कपड़ों का गट्ठर उठाए कपड़े पहुँचाने के दौरे पर था। इतनी धूल मत उड़ाओ, उसने नत्थू को पुकारा। क्या तुम अभी तक नाराज़ हो कि वो सैलरी में 2 रुपए बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay, and this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I am off. Not another week. I work in this place. And Nathu banged the pan against the dustbin several times, just to emphasize his point and giving himself confidence. Well, I wish you luck, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. मुझे इस बारे में बात नहीं करना, स्वीपर बॉय ने शिकायत की। अब तो 20 तारीख हो गई और मेरी तो इस महीने की सैलरी भी नहीं मिली है। कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी भी रोक सकता है? जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, 1 वीक भी नहीं रुकूँगा। अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखने के लिए उसने दस्ते को डस्टबिन पर कई बार ठोका। ठीक है, आई विश यू लक, सीताराम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए किसी मुनासिब काम पर नज़र रखूँगा। वो नंगे पांव भारी कदमों से आगे बढ़ गया। कपड़ों के बड़े गट्ठर की वजह से उसका सर और कंधा साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay, and he wants to live. Is that so? Said Mrs. Srivastav. Well, tell him to come and see me tomorrow. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. Mrs. Srivastav had to do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. जब वो चौथे घर पहुंचा तो उसने सुना कि उस घर की औरत को एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत है। अपने गट्ठर को बांधते हुए उसने उन्हें बताया कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ, वो नए काम की तलाश में है, नेक्स्ट मंथ से वो आ सकेगा। अभी वो बैंक में काम कर रहा है, मगर बैंक वालों ने उसे अभी तक सैलरी नहीं दी है। वो वहाँ से काम छोड़ना चाहता है। ऐसा है क्या? मिसेस श्रीवास्तव ने कहा। उसे कल आकर मुझसे मिलने को कहो। अपने कस्टमर और अपने फ्रेंड के काम आने पर वो खुशी खुशी अपना गट्ठर कंधों पर उठाकर आगे बढ़ गया। मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग करना थी। उन्होंने अपने बेबी के लिए कुछ हिदायत आया को दी और कुक से कहा कि दोपहर का खाना जल्दी तैयार कर ले, और फिर वो कपड़ों की दुकान पर पीपल नगर की मार्केट में चली गईं। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. She then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper, who hasn't received his wages for over a month. मार्केट के आखिरी कॉर्नर पर इमली का एक पेड़ था। वहाँ उनकी फ्रेंड मिसेस भूषण गर्मी से बचने के लिए हाथों का पंखा हिला रही थी। उन्होंने मौसम गर्मा के बारे में बात की। रियली ये पीपल नगर की हिस्ट्री में एक गर्म दिन था। फिर उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े का नमूना दिखाया जो वो ख़रीदना चाहती थी। उस कपड़े के रंग और डिज़ाइन के बारे में बात करते हुए मिसेस श्रीवास्तव ने उन्हें कहा, क्या तुम जानती हो माय डियर, सेठ गोविंदराम के बैंक में एम्प्लॉइज़ को पे नहीं मिल रही है। मुझे उनके स्वीपर से मॉर्निंग में ही ये शिकायत मिली। उसे अभी तक इस महीने की पे नहीं मिली है। Shocking, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with the owner. So
"There you are!" cried Mrs. Bhushan. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" "Nowhere," replied Mr. Bhushan. "Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden." "शॉकिंग!" मिसेस भूषण ने जवाब दिया। अगर वो अपने स्वीपर बॉय को पे नहीं कर सकते तो हालात ख़राब होंगे। उन्होंने किसी को भी पे नहीं किया होगा। अपने हस्बैंड की तलाश में मिसेस श्रीवास्तव को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गईं। वो कमल किशोर की फ़ोटो की दुकान पर उसके ओनर से बात कर रहे थे। "अच्छा, आप यहाँ हैं? मैं आपको 1 घंटे से तलाश कर रही हूँ। कहाँ गायब हो गए थे?" मिसेस भूषण ने चिल्लाते हुए कहा। "कहीं नहीं, तुम एक दुकान पर ठहरती तो मैं मिल जाता, मगर तुम तो एक शॉप से दूसरी शॉप में जाती हो, जैसे हनी बी फूलों के गार्डन में घूमती है," मिस्टर भूषण ने जवाब दिया। "Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what is happening to people Nagar. Even the bank's about to go bankrupt." "What is that?" said Kamal Kishore, sitting up suddenly. "Which bank?" "Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore." "No, but my neighbour's has," he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door, "Deep Chand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can." "बड़बड़ाना बंद करो, पहले ही गर्मी ने परेशान कर रखा है। जाने पीपल नगर में क्या हो रहा है। बहुत जल्द बैंक भी दिवालिया होने वाला है." "क्या कह रही हो?" कमल किशोर उठकर बैठ गया। "कौन सा बैंक?" "अरे यही पीपल नगर बैंक। मैंने तो सुना है उन्होंने अपने वर्कर को भी पे देना बंद कर दिया है." "मिस्टर किशोर, आपका अकाउंट तो नहीं है ना वहाँ?" "नहीं, मगर मेरे पड़ोसी का है." उसने हैरत की और फिर छोटी दीवार के उस तरफ बार्बर को आवाज़ दी और कहा, "दीपचंद, तुमने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी? पीपल नगर का बैंक बंद होने वाला है। जल्द से जल्द अपने पैसे निकाल लो." Dear students, it is the end of the first part of the lesson, and the second part will be continued in the next video. Comment down below if you have any doubts. Please do like, share and subscribe. Press the bell icon for the notification of new videos. Thanks for watching.